Do like and subscribe our YouTube channel. Namaste. So today we will understand about water consumption. पानी कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, and what are the advantages and disadvantages of overhydration. According to Ayurveda, पानी जितना उतना ही पीना चाहिए जितना वो डाइजेस्ट हो जाए. जस्ट लाइक फूड, हमें खाना उतना खाना चाहिए जितना वो इजिली डाइजेस्ट हो जाए, absorb हो जाए by the body. We cannot just count that this much food you require, your body requires. Similarly, we cannot count the quantity of water required for an individual. Drink water which can be digested by body and it does not lead to agni-mandya matlab indigestion या ama matlab toxins in your body. The quantity of water according to Ayurveda depends on an individual constitution. Number one, that's your prakriti. Number two, it depends on the kind of work you do and kind of locality you belong to. And number three, it belongs on the kind of season. So all these three factors are the most important factors जिस पे डिपेंड करता है how much water a person should consume. Drinking और counting in liters, जैसे हम आजकल बहुत ही कॉमनली सुनते हैं कि दिन भर में आपको 6 से 7 से 8 लीटर्स पानी पीना चाहिए. Even children are advised these days to finish 4-5 bottles of water throughout the day. But drinking or counting liters is not the right way of water consumption. ओवरहाइड्रेशन मतलब अत्यंबुपान, अति अंबुपान मतलब ज्यादा पानी पीना. इट मे लीड टू इंडाइजेशन. नाउ इमेजिन आप आहुति कर रहे हैं या फायर है और वहां पे आपने बहुत सारा पानी पोर किया, तो फायर का क्या होगा? द फायर विल गो अवे. Similarly with your body happens with your digestive fire. अगर आप खाना खाते वक्त या खाने से पहले या throughout the day you just keep pouring a lot of water into your body, it eventually ends up lowering your digestive fire and leading to various ailments in future. तो overhydration leads to मतलब indigested food या अग्निमांद्य उसकी वजह से हो सकता है eventually, which can eventually lead to fever. आपकी जो बॉडी सप्त धातु है उनका नाश हो सकता है एंड इवेंचुअली इट कैन इनवाइट वेरियस एलिमेंट्स. Hence overconsumption of water may lead to serious ailments like joint pain या arthritis या acidity, indigestion या chronic cold या cough या asthma हो सकता है और breathlessness, you may feel breathless या skin ailments हो सकते हैं. It may lead to diabetes, spondylitis, edema, water retention. It can also lead to menstrual disorders, liver and thyroid related problems, and blood impurities, and such various other ailments may happen due to overhydration. बहुत ज़्यादा पानी पिया तो ये सब आप invite कर सकते हैं. So we should also understand one important thing is your kidneys. Your kidneys filter out excess waste and water from the bloodstream, okay, but they can only process 800 to 1000 milliliters in an hour. So if you drink more water, this may lead to trouble, as this water, whatever overconsumption of water is happening, this water ends up in the blood cells leading to water intoxication, which is a big trouble we are inviting. Okay, so with overhydration, kidneys have to work harder, creating a stressful reaction from your hormones that leads to your bodily stress, and it will lead to fatigue, and which can overburden the heart and your blood vessels as well. Now when should you drink water? खाने के बाद तुरंत जब आप पानी पीते हैं तो आयुर्वेदा में उसे दिशा समान
it reacts like a poison, in the sense it will lower down your digestive fire, eventually lead to indigestion and eventually invite various ailments. तो तुरंत खाने के बाद पानी नहीं पीना है. पोस्ट फूड डाइजेशन मतलब खाना पीने के बाद wait until your food is digested and then when you drink water, that is very good. It improves your strength and stamina. इन बिटवीन मतलब खाना खाते खाते आप सिप बाय सिप मतलब 2-3 निवाले खा के आप एक सिप पानी पीते हैं, सो दैट इज वेरी गुड. इट विल इम्प्रूव द डाइजेशन. जो भी खाना आप खाते हैं उसमें मॉइस्चर लाके खाना इजीली डाइजेस्ट होने में मदद होती है. Okay, so then these are the 3 ways to consume water during your food consumption, and throughout the day drink water only when you are thirsty. Okay, if you have indigestion तो boiled water पीना है, because when you have indigestion your digestive fire is so weak that it cannot even digest the water. So उस time पे आपको boil करके पानी पीना है. So whatever water you boil is reduced to half. That way you have to boil and it gets lighter on your stomach. Okay, so drink only when you are thirsty. Your quantity totally depends on your thirst. मतलब winters में या monsoons में आपको प्यास नहीं लगेगी, so it's not necessary that you have to go and just gulp water. एंड समर्स में आपको 2-3 ग्लास पी के भी सटाइटी नहीं आती है, सो दैट टाइम जस्ट ड्रिंक वाटर. सो जस्ट गो अकॉर्डिंग टू द सिग्नल्स योर बॉडी इज सेंडिंग टू यू, योर ब्रेन इज सेंडिंग टू यू, एंड ड्रिंक वाटर अकॉर्डिंगली. पानी हमेशा बैठ कर पीना चाहिए. नेवर स्टैंड अप एंड हैव वाटर. अगर आप बैठ के पानी नहीं पीते हैं, खड़े होके पानी पीते हैं, तो इट मे लीड टू नी जॉइंट पेन इवेंचुअली, या आपका बेली बढ़ सकता है. हमेशा पानी नॉर्मल टेम्परेचर का पिए, और इफ यू डोंट वांट टू ड्रिंक नॉर्मल टेम्परेचर इन द समर्स यू कैन हैव मटका पानी, बट अवॉइड फ्रिज का पानी. ओके, सो इवेंचुअली नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ मच वाटर शुड बी कंज्यूम्ड व्हेन इट हैज टू बी कंज्यूम्ड. सो वन रूल you need to understand is the schools also need to motivate children to drink water only when they are thirsty.